friends, a very important and necessary session for those who want to make their career in ICICI Bank. And today, this session would be going to be very fruitful. So, my team is ready? Yes. Are you comfortable? Yes. Okay. So, Bharti, you want to go in ICICI Bank, isn't it? Yes. तो डेफिनेटली आप ICICI बैंक के बारे में तो कुछ जानते होंगे. Yes. प्लीज बताइए हमें. ICICI Bank Limited is an Indian multinational banking and financial services headquartered in Mumbai, Maharashtra. Okay. In 2014, it was the second largest bank in terms of assets and the third in terms of market capitalization. Okay. The bank currently has a network of 46,467 branches and 14,417 ATMs across India. Okay. ICICI Bank established in 1995 and internet banking started ICICI Bank of 1998. Okay. Wonderful. So, Bharti, you may have option to go in HDFC, Axis Banks. वो भी तो अच्छे बैंक्स हैं. तो आपने ICICI ही क्यों चूज किया? So because my all relatives are in abroad and Okay. I also want to go there. Okay. And you also know that ICICI has branches in abroad. Oh, that's very good. So she has a big dream. Long term planning करके चल रही है. Yes. Right? Bharti, what does your name mean? So my name is Goddess Saraswati and I am blessed by her in education. Okay. Throughout my education, I always remain a first division holder. Okay, that's very good. So why do you choose banking as your career? आप टीचिंग जॉब जा सकते थे और गर्ल्स के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है कंपनीज वगैरह में, तो आपने बैंकिंग ही क्यों चूज किया? So teaching is also a professional job and I respect that. But bank is the Any reason? Any valid reason? because this is one of the potential sector going with an excellent rate, Okay. and here we get an opportunity to meet different personalities, which itself are my hobbies. Okay. In regularity in the working environment, which make us to remain free from resting. The bank provide us various facilities which also cover our monetary aspect, which I believe is quite necessary for a middle class girl like me. Okay. Social reputation and respect in society motivate me to join banking sector. Okay. भारती, मान लो हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, बट इन योर बैंक यू आर वर्किंग एंड सडनली ए ड्रंकर्ड पर्सन केम, बहुत ड्रिंक किया हुआ उसने एंड ही केम, और वो पैसे निकालने के लिए जिद कर रहा है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, सारे पैसे निकालने मुझे. तो आप ऐसे पर्सन के लिए क्या करेंगे? क्या आप उसे बहुत इजीली पैसा दे देंगे या आप कुछ स्टेप लेंगे? So I think मुझे दे देने चाहिए. Okay. Because there are a lot of cameras. Okay. So but don't you think that he has drunk a lot, और बहुत उसने शराब पी रखी है, और ऐसे व्यक्ति को एक साथ सारे पैसे दे देने बैंक शायद सही ना हो? क्या कहते हैं आप? क्या आपको अपने सीनियर से एटलीस्ट डिस्कस नहीं करना चाहिए पहले? Sir, yes. Obvious. First I discuss Yeah, my because senior. yes, we can't give directly to money those who is excess drunk, right? चलिए मुझे बताइए, क्या एक इंसेन व्यक्ति का अकाउंट खोला जा सकता है? इंसेन का मतलब होता है ल्यूनेटिक, यानी कि थोड़ा सा मेंटली रिटायर्ड पर्सन. तो क्या आप किसी इंसेन का अकाउंट खोल सकते हैं जो मेंटली सही ना हो? No, sir. हाँ, तो रोब से बोलिए, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अगर आपको मालूम है तो बताइए, नहीं मालूम तो मत बताइए. I think so, no, sir. आई थिंक नहीं, नो वी कांट ओपन. We can't open. राइट. आप पर्सनल एक सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं या करंट अकाउंट? Saving account. करंट अकाउंट क्यों नहीं खुलवा सकते आप? Because current account का purpose is business. ओके, गुड, आप अच्छे से मालूम है. यस, प्लीज गरिमा, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. What is NPA? NPA, non-performing assets. When interest or other due to bank remains unpaid for more than 90 days, then total amount automatically turns in NPA. ओके. Types? How much types? There are 4 types of NPA. First is standard, Yes. and second one is doubtful, Yes. and third one is loss. स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड Yes. लॉस. Yes. क्या स्टैंडर्ड क्यों कहा जाता है उसको? Because on time पर अगर पेमेंट इज डन. Yes. एंड व्हाट अबाउट सब स्टैंडर्ड? Substance is and It took 12 months. And about 12 months, it is doubtful. Doubtful. And more than 3 years? loss. Okay, that's nice. So, what do you mean by the word you stated NPA? You gave good answer. Crediting agency. सुना आपने? Yes, sir. बताइए. Credit rating is also called debt rating. Okay. It is a method of measuring the
Health of a country, definitely measure the health of country. countries, and it Economy. also worthiness of credit or debt issuer. ओके, सो आप थोड़ा सा जीडीपी को ऐड कर लिया आपने, अदरवाइज Yes. डेट इशूअर की क्रेडिट वर्दीनेस को Worthiness. बताता है, ये आपने सही कहा। अच्छा, ये क्या रीजन है, यानी कि क्रेडिटिंग एजेंसीज कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है, कुछ नेम्स हैं इनके, Yes sir. बताइए। On ICRA, ओके, CRISIL, CRIS, CIBIL, Duff and Flats. वेरी गुड, वंडरफुल। कोई इंटरनेशनल है, Yes sir. बताइए। Poor and Standard. Yes, standard and poor, not poor and standards. Okay. It's standards and poors. Okay, more, name more. Moody's बहुत Investor सही। Service Yes. और Fitch Rating. Yes. Okay, so Duff and Phillips, Chicago based है ये, right? Chicago. Onicra, it got started by Onida, right? And we have one that is ICRA, right? Yes. और जो क्रिसिल है वो स्टार्ट की गई थी आईसीसी बैंक और यूटीआई बैंक के द्वारा। यूटीआई का नाम एक्सिस बैंक है, isn't it? Okay. Yes. And international, as you stated, Standard Poor's, Moody's Investors and Fitch Ratings, right? Wonderful. किन फैक्टर्स को देखते हुए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज काम करती है? Business risk, financial risk, business environment and Yes. management. Okay. So, do you have a selling skills? क्या selling skills है आपके अंदर? Yes. Okay. So definitely you can sell anything. Yes sir. Can you sell this turtle? Yes definitely. Okay. Hello sir. Hello. Hello ma'am. Hello. Hello. Sir. This is a lucky turtle, you can say. Yes sir. Yes. This is a lucky turtle. Okay. It is very beautiful and we can gift anybody to this. Yes. This is very charming and Then you can state it's that it can be given gift to anybody. Yes, And sir. you can talk about its weight, its transparent body. Yes. It is a glassy body Yes. and superb It's and very looks beautiful. cheap rate. Yes, no, we should not use the word cheap. It looks cheap in quality. We should use the word economical. It is quite economical, It is sir. quite Very economical economical, rate yes, it is yes. having, right? Yes. And you can give it gift to somebody, and it is somewhat lucky for others, right? Yes, sir. So definitely, we believe that is enough. But I'm not satisfied with the way you sell the turtle. I want something else. Can you sell this pen? Yes sir. Right, come on. Hello sir. Hello. Hello ma'am. Hello. So I am Bharti from Cello Company. This is an excellent pen by Cello Company. Its nib is very fine quality. Okay. Yes. And it has a transparent body, so we can easily see the level of ink. Very good. It has a grip of rubber, so when we write, no sweats occurs writing. Yes. Very good. Very good. It has an attractive pen Good. which enhance our personality. Okay. It writes very smoothly and there is a facility of changing refill when necessary. Right. It's the same writing at 0 degree Celsius and 50 degree Celsius. Right. It was only 20 rupees. We have a Now No, newer offer- New Year is newer. coming. Okay. offer. Okay. If you purchase 10 pen together, then I will give you a discount at the 5%. Oh, that's It great. it is available at all stationery shops. Very good, wonderful, good selling skills. Really, I appreciate your concern of selling the things. चलिए भारती, आप मुझे बताइए कि एक बैंक क्लरिकल की स्टाफ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या क्या जिम्मेदारियां होती है उसकी? A bank clerk has a lot of qualities or responsibilities. Sorry. Yes, yes. And first is that manage customers. Yes, they manage and customers. handles customers. Yes. And their financial transaction Yes. through bank clerical functions. Right. And deposit and payments, record all the deposits and payments into bank computer service systems and pay. Can you help her by saying some responsibilities? Please Yes, tell. sir. Educate customers on bank Bank. product Yes. and services. Yes. Assist administrative department in their task. Right. And record all deposit and payment into the bank computer system. Right. And respond all customer service inquiries. And Good. perform physically verification at cash of the end of the day and recycle with the banking terms. Yes. And also
handle customers and Wonderful, wonderful, appreciable. But whatever duties and responsibilities you should say, you must know that duties. Okay. They can ask you about the duties of clerical. They can ask you about the duties of PO, even officer grade, who handles, who cares, who supports the clerical staff. Other than doing all these things, क्योंकि उनको भी हो सकता है प्लान्स बताने पड़े, लोन्स सैंक्शन करने पड़े, लोन्स डिपार्टमेंट में उनको अलग अलग ट्रांसफर्स होते हैं. कैन यू वर्क एनीवेयर इन इंडिया? Yes, sir. आप जा सकते हो कहीं भी किसी भी कॉर्नर पे. Yes, sir. तो यू डोंट हैव होम सिकनेस. कल अगर आपको घर की याद आती है तो छोड़ देंगे आप जॉब? No, sir. कर लेंगी जॉब? Yes, sir. ओके. मैनेज कैसे करेंगी? आप कभी बाहर रहे हैं घर से? No, sir. तो आप कैसे मैनेज करेंगी? कहाँ रहेंगी आप? Sir, easy है मेरा. ओके. सो क्या आप इजी कंफर्टेबल हो रहने के लिए? रह पाओगे? Yes. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? Yes, sir. ओके. सो वीकनेस क्या है आपकी? क्या लगता है अभी आपको? Communication skill. ओके. लगता है आपको कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है. आप उसके लिए कुछ कर रहे हो अभी फिलहाल? Yes, sir. जैसे? So join PD classes. ओके. देखो वन थिंग, आप यहाँ पर आए, पीडी क्लासेस आपने ज्वाइन Yes, किया, sir. हम आपके ऊपर पूरी मेहनत कर रहे हैं, मगर आप खुद के लिए और क्या कर रहे हो अदर देन पीडी क्लासेस? Reading books at the home ओके. and see YouTube videos. ओके, दैट्स नाइस. चलो हम आपसे पूछना चाहते हैं भारती कि हमारे पास ना बहुत कैंडिडेट्स हैं यहाँ जो वेट कर रहे हैं इस जॉब का, तो हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? व्हाट इज द रीजन? Sir, although at present I can't judge others who are standing in a queue like me, Okay. yet I'm assure you about myself that I'm a determined and a dedicated person, especially towards my work. I assure you that if you give me a chance, and I'll justify your selection by working honestly and sincerely. Very Moreover, good. I'm a commerce graduate with a first vision, Okay. and I can easily understand the banking terms. I'm affable and a good relationship builder. Sir, I need a one chance to show my strength. ओके, दैट्स वेरी नाइस. आपने जो हमें अकाउंट्स बताए थे, जो टाइप्स आपने करंट और सेविंग बताए थे, उसी तरीके से एक एफडी और आरडी होता है, वो किसके अंडर में आते हैं? So, टर्म डिपॉजिट के अंडर में. डिमांड के अंदर आते हैं दो, सेविंग और करंट. Very good. फिक्स्ड और वो आरडी के अंदर. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सीआरआर कितनी चल रही है? 4%. ओके. सीआरआर होता क्या है? कैश रिजर्व रेशो. ओके. और एसएलआर? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ओके. सो यू शुड स्टेट ऑल दिस मॉनेटरी लैब्स आल्सो, जो आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, राइट? चेक और ड्राफ्ट में जो आपने डिफरेंस बताते हो, तो मेजर डिफरेंस क्या रहता है? सबसे मेजर डिफरेंस क्या होता है? The major difference between check and draft is that check is like a postpaid and draft is like a prepaid. वेरी गुड. शी हैज गिवन अ गुड एग्जांपल, राइट? आईसीआईसी बैंक के बारे में इनके कुछ एम्प्लॉयज बता सकते हैं? कितने एम्प्लॉयज हैं इनके? So 18,000 which. ओके. सो Above 18,000. प्लीज चेक एंड रेफर अगेन. आप और अच्छे से करना. अपनी फैमिली के बारे में बताइए. चलिए. We are 3 members in our family. My grandmother is the head of our family, Okay. and my father is a businessman. ओके. मान लीजिए हम आपको पोस्टिंग अमृतसर में दे देते हैं, Yes, sir. तो वहाँ तो पंजाबी माहौल है. क्या पंजाबी आती है आपको? Yes, belongs to Punjabi culture. ओके. सो क्या आप हमें अपना इंट्रोडक्शन पंजाबी में दे सकते हैं? Yes, sir. ट्राई कीजिए. Sir, मेरा नाम जोर से बोलिए. मेरा नाम भारती है ओके. ਤੇ ਮੈਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ओके. ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ओके. ਐਂਡ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ. ओके. ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਵਾਚਿੰਗ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਮੂਵੀਜ਼, ਐਂਡ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ. ओके. ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ओके. ਐਂਡ ਸਰ ਮੇਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਮ ਪੰਕਚੁਅਲ ਐਂਡ ਆਮ ਓਨੈਸਟ ਪਰਸਨ. Okay. Really nice, appreciable, right? In Punjabi, she gave good answers. So, what about English? Can you comfortable with English also? Yes, sir. Introduce. I'm Bharti. I'm from Sri Ganganagar, which is also known as the food basket of Rajasthan. My name is Dignity. My name is Goddess Saraswati. I am blessed by her in education. Throughout my education, I always remain a first vision holder. My hobbies are that I'm working on computer, watching inspirational movies, and interacting new personality. I'm a jovial girl, and I don't like remain anybody side to my company. Oh. I want to make my career in banking sector. My friends call me a versatile personality because of my adjustable nature. That's nice. So, you stated more points in English, isn't it? Right? But still, your Punjabi was good, which shows that you can easily manage. तो अगर हम आपको अमृतसर वगैरह भेजते हैं, तो मुझे लगता है आप इजीली अपने आप को मैनेज वहाँ कर लेंगे, राइट? चलिए, इन्फ्लेशन वर्ड के बारे में समझाइए हमें. इन्फ्लेशन क्या होता है?
Inflation is defined as a sustained increase in the level of prices of goods and services. As the inflation rises, the value of currency goes down, and thus the purchasing power of currency too goes down. Inflation is controlled by RBI through monetary policy, and also by the government by fiscal policy. Okay. So I believe the introduction part you have covered well. Now it's the right time to ask you that you answered me NPA, isn't it? Yes, sir. Which was good. You stated even 4 types of NPAs. That was nice. Is there any act for NPA? Yes, sir. What is that? SARFAESI Act. SARFAESI Act. Can you tell me the full form, please? Yes, sir. Please. The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of Security Interest Act. Yes. Oh, that's nice. She knows, right? Any more question is remained? What is GDP? Gross domestic product is a primary indicator to measure the health of a country's economy. Okay. Yes, sir. And it is defined of a market value of all final goods and the services produced within a year and in a country. Okay, that's nice. So whatever questions we have asked you, you answered well. But we want that every interview we should come up with new questions Yes. that would make you prudent enough to gain good marks during the real interview. Although this is a mock session. So here it's the right time to talk to our viewers. You know very well we are calling our students for 7 days. They are coming. They are practicing here. Whole day they are with us. Other than that, we are making it to prepare for telephone professions. And we have our books, particularly Universal book is one of the best book for banking sectors. And moreover, students, if you really want to grow and you want to be mature, then go with at least with our videos which are totally free of cost for you people. And for banking purpose, almost 100 above videos I have given to you. So what are the PD के बारे में आप क्या कहोगे? क्या आप satisfied हो यहाँ से? Yes, sir. यहाँ का food accommodation कैसा है? बहुत अच्छा है. Okay, so what do you think? Even you have also come for ICICI Bank only. So what do you think? क्या आप PD से satisfied हो? आप यहाँ की classes से satisfied हो? Yes. कितनी progress कर चुके हो? क्या लगता है अभी तक आपको? प्रोग्रेस कर चुके हैं काफ़ी. Okay. अभी और करनी है. Very good. So there is no end I can say. जितनी बार हम इंटरव्यू देंगे, जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे, that is the best thing. Okay? So कोई अच्छी बात आपको चेंजेस लगे इनके अंदर? इनकी फ्लुएंसी आगे से अच्छी हो गई है. Oh, very good. So your fluency has increased. Your way of speaking has become good. Even now it looks you are more confident. Yes. पर अभी रेस बाकी है, Yes. right? पिक्चर अभी बाकी है. You have to work more. और हम चाहते हैं एक ऐसा फर्निश इंटरव्यू आप दो जिसमें बोलते समय ऐसा लगना चाहिए बहुत कॉन्फिडेंट गर्ल, राइट? क्योंकि नॉलेज तो एंडलेस है. जितना करते जाओगे हर दिन एक नया क्वेश्चन आता रहेगा, मगर बताने का जो वे है वो बहुत सुपर्ब होना चाहिए, राइट? सो इट्स राइट टाइम टू गिव हर ब्लेसिंग्स. सो माय ब्लेसिंग्स टू यू. डेफिनेटली विल गेट सिलेक्टेड सून. ओके.